तो विद्यार्थी मित्रों, आज आप चर्चा करीशू केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 घन अवस्था। लास्ट विडियो में आपणे स्फटिकमय घन पदार्थ की बात करी थी। आज आप चर्चा करीशू अस्फटिकमय घन पदार्थ। तो आ प्रश्न पण केवो कहेवाय, मोस्ट टाइम भी कहेवाय। तो अस्फटिकमय घन पदार्थ तो आ प्रश्न केवो छे तो मोस्ट टाइम भी है। हवे अस्फटिकमय घन पदार्थ कोने कहेवाय आपणे चर्चा करी लईए। तो स्फटिकमय घन पदार्थ में आपणे एवुं कीधुं हतुं के घटक कणो जे छे ए लांबा विस्तारमां कई रीते गोठवायेला होय, नियमित रीते गोठवायेला होय। तो अहींया अस्फटिकमय घन पदार्थ छे એટલે તમે વિચારી શકો કે ઘટક કણો લાંબા અંતર સુધી નિયમિતપણે ગોઠવાયેલા હોઈ શકે નહીં। તો કેવી રીતે ગોઠવાયેલા હોય? ટૂંકા વિસ્તારની અંદર ક્રમમાં ગોઠવાયેલા હોય, પણ લાંબા અંતરે ક્રમમાં ગોઠવાયેલા હોતા નથી। તો આપણે આ રીતે લખી શકીએ, अस्फटिकमय घन पदार्थमां घटक कणों तरीके शुं होय? तो घटक कणों तरीके आपणे जो लईए तो परमाणु होय, त्यार पछी शुं होय? अणु होय अथवा आयन होय। आयनो એટલે કે ઘટક કણો નો ટૂંકા વિસ્તારમાં ક્રમમાં ગોઠવાયેલા ઘટક કણો ટૂંકા વિસ્તારમાં ક્રમમાં હોય છે, ગોઠવાયેલ હોય છે। तो स्फटिकमय पदार्थनी अंदर लांबा विस्तारनी अंदर क्रममां गोठवायेला हता। अहींया अस्फटिकमय पदार्थनी अंदर आ गोठवणी लांबा अंतर सुधी होय नहीं, पण केवुं होय? टूंका अंतर सुधी होय। हवे आवी गोठवणीमां नियमित अने आवर्तित पुनरावर्तित थती भात मात्र टूंका अंतर सुधी ज होय। तो आवी गोठवणीमां नियमित अने आवर्तीय पुनरावर्तित भात मात्र टूंका अंतर सुधी जोवा मळे। टूंका अंतर सुधी जोवा मळे छे, लांबा अंतर सुधी जोवा मळे नहीं। नियमित એટલે સ્ફટિકમય પદાર્થની અંદર નિયમિત ભાત હતી એ લાંબા અંતર સુધી જોવા મળતી હતી। અહીંયા નિયમિત ભાત હોય પણ ટૂંકા અંતર સુધી જ હોય। આवर्तीय પુનરાવર્તિત એટલે એની એ ભાતનું પુનરાવર્તન થતું હોય, તેને આપણે આवर्तीय પુનરાવર્તન કહીશું। તો આવી આवर्तीय પુનરાવર્તિત ભાત જે છે એ માત્ર તમને શું જોવા મળે? ટૂંકા અંતર સુધી જ જોવા મળે છે। આવા જો अस्फटिकमय પદાર્થની વાત કરીએ તો ક્વાર્ટઝ। तो ऑब्जेक्टिव में पूछाय तो याद रखवानुं, अस्फटिकमय घन पदार्थ कयो तो क्वार्टज ए केवो कहेवाय? अस्फटिकमय घन पदार्थ छे। पछी बात करीए तो रबर अने प्लास्टिक। तो आज प्लास्टिक पदार्थ जे छे तो प्लास्टिक पदार्थो, तो रबर प्लास्टिक पदार्थों ने तमे प्रवाही में रूपांतर खूब ऊंचा तापमाने प्रवाही में रूपांतरण करी भाई तमे ठंडा पाड़ो त्यारे घन स्वरूप में आवे। ज्यारे आ घन स्वरूप में आवे त्यारे एमनी गोठवणी केवी होय? अनियमितपणे होय। अणुओनी, परमाणुनी अथवा तो आयननी गोठवणी केवी होय? अनियमित होय। जेथी आपणे आवा पदार्थोने केवा पदार्थो कहीशुं? अस्फटिकमय पदार्थ कहीशुं। तो दाखला तरीके आपणे शुं लईशुं? तो क्वार्टज, रबर अने प्लास्टिक पदार्थो जे छे एने गरम करी प्रवाही स्वरूप में फेरवी अने फरी पाछा ठंडा पाडवामां आवे त्यारे केवा स्वरूपे होय? तो अस्फटिकमय पदार्थ तरीके वर्ते। केवी रीते वर्ते? अस्फटिकमय पदार्थ तरीके वर्ते। आनी जो आकृति दौरीए तो ए आकृति आपणे आ रीते मळे। धारो के आपणे आ विस्तारथी शरू करीए। आकृति हमेशा कई रीते दौरवानी? पेन्सिलथी ज दौरवानो प्रयत्न करवानो। धारो के आ विस्तार जे छे
એમાં અણુઓની ગોઠવણી આ રીતે ચોક્કસ છે. ધારો કે જે આપણે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં ભણી ચૂક્યા. ફરી પાછું અહીં કોઈ વિસ્તાર એવો આવે કે જેમાં અણુની ગોઠવણી ચોક્કસ આ રીતે હોય નહીં. ફરી પાછું અહીંયા આપણે એવો વિસ્તાર લઈએ જ્યાં અણુની ગોઠવણી કેવી હોય તો આવી ચોક્કસ હોય. ફરી પાછું અહીંયા હોય કોઈ વિસ્તાર હોય કે જ્યાં અણુઓની ગોઠવણી ચોક્કસ હોય નહીં. ફરી પાછું અહીંયા એવું હોય કે અણુઓની ગોઠવણી કેવી હોય તો આવી ચોક્કસ હોય. અણુ હોય, પરમાણુ હોય કે આયન હોય, એની ગોઠવણી આવી રીતે ચોક્કસ હોય. ધારો કે આ વિસ્તારની વાત કરીએ તો અહીં અણુ અથવા પરમાણુની ગોઠવણી કેવી હોય તો ચોક્કસ હોય. આ રીતે ચોક્કસ ગોઠવણી હોય. તો આવો જે ઘન પદાર્થ જે છે એ ઘન પદાર્થને આપણે શું કહીશું? અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ કહીશું. ધારો કે અહીંયા આપણે અણુ આ રીતે ગોઠવીએ, વચ્ચે બીજો કોઈ અણુ લઈએ, આટલા વિસ્તારમાં ટૂંકા અંતર માટે કેવા હોય તો ચોક્કસ ગોઠવણી જોવા મળે. પરંતુ અહીંયા પાછી કેવી આવે તો અચોક્કસ ગોઠવણી આવે. અહીંયા કેવી હોય તો અચોક્કસ ગોઠવણી ધારો કે છે. ફરી પાછી અહીંયા તમને શું જોવા મળે? ટૂંકા અંતર માટે કેવી જોવા મળે તો ચોક્કસ ગોઠવણી જોવા મળે. તો આ રીતનો જે પદાર્થ જે છે એવા પદાર્થને આપણે કેવો પદાર્થ કહીશું? અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ કહીશું. હવે અસ્ફટિકમય ઘન પદાર્થનો આકાર તમે જુઓ કેવો છે. તો આનો આકાર આપણે જોઈએ તો કેવો આકાર છે? અનિયમિત આકાર છે. તો અહીંયા આપણે આવું લખી શકીએ, અસ્ફટિકમય પદાર્થનો આકાર અનિયમિત હોય છે. આકાર કેવો હોય છે? અનિયમિત હોય છે. હવે જે રીતે આપણે સ્ફટિકમય પદાર્થની વાત કરી હતી ગલનબિંદુની, તે રીતે આપણે અસ્ફટિકમય પદાર્થના ગલનબિંદુની વાત કરીએ. તો ગલનબિંદુની જો વાત કરીએ તો તાપમાન પહેલામાં શું હોય કે ગલનબિંદુ ચોક્કસ હતું. અહીંયા આકાર અનિયમિત હોવાથી અહીંયા શું લખાય આપણે? તાપમાનના ગાળામાં ચોક્કસ એનું ગલનબિંદુ ના હોય એટલે આપણે આ રીતે લખી શકીએ કે તાપમાનના ગાળા દરમિયાન ધીમે ધીમે નરમ થાય છે, તેથી તેનું ગલનબિંદુ ચોક્કસ નથી. હવે પહેલામાં આપણે સ્ફટિકમય પદાર્થની વાત કરી હતી કે જ્યારે એને કાપવામાં આવે તો જ્યારે બે ભાગ વિભાજિત થાય ત્યારે એની સપાટી કેવી બને? લીસી અને સુવાળી હોય. જ્યારે અહીંયા તો આકાર જ અનિયમિત છે તો પછી એની જે તીક્ષ્ણ ધાર વડે જો કાપવામાં આવે ત્યારે અનિયમિત સપાટીવાળો ભાગ ઉત્પન્ન થાય. કેવો? સપાટી કેવી હોય? લીસી હોય નહીં. તો અહીંયા આપણે એનો કયો ગુણધર્મ કહીશું? કાપવાનો ગુણધર્મ એને આપણે ચિરાડ ગુણધર્મ કહીશું. તો એના ચિરાડ ગુણધર્મની વાત કરીએ તો જ્યારે તીક્ષ્ણ ધારવાળા સાધન વડે કાપવામાં આવે ત્યારે બે અનિયમિત સપાટીવાળા ભાગમાં વિભાજિત થાય છે. ત્યારે બે અનિયમિત સપાટીવાળા ભાગમાં વિભાજિત થાય છે. આને આપણે એને શું કહીશું? ચિરાડ ગુણધર્મ કહીશું. તો ફરી આટલું તમે સમજી લો.
तो अस्फटिकमय घन पदार्थ में घटक कणों परमाणुओं अणुओं अथवा तो आयनो टूंका विस्तार में कई रीते गोठवायेला होय छे तो क्रम में गोठवायेला होय छे। आवी गोठवणी में नियमित और आवर्त रीते पुनरावर्तित भात मात्र टूंकांतर सुधी जोवा मळे छे। एना एक्जाम्पलनी बात करिए तो क्वार्ट्ज काच रबर और प्लास्टिक पदार्थों जे छे एनी आकृति तमारे पेन्सिलथी दोरवानी जे अनियमित है जो जुदा जुदा विस्तारनी अंदर धारो के आ विस्तारनी अंदर आटली नियमित गोठवणी जे टूंकांतर माटे छे फरी पाछो अहींया आटला विस्तारनी अंदर नियमित गोठवणी जे टूंकांतर माटे छे पछी आखो भाग केवो आव्यो तो अनियमित भाग आव्यो के रीते अहींयो पण टूंकांतर माटे नियमित गोठवणी। तो आवा पदार्थने आपणे अस्फटिकमय पदार्थ कहीशुं। अस्फटिकमय पदार्थनो आकार केवो होय छे तो अनियमित होय छे। गलन बिंदुनी जो बात करीए तो तापमानना गाळा दरमियान धीमे धीमे नरम थाय छे एटले चोक्कस गलन बिंदु होतुं नथी। चिराड गुणधर्मनी बात करिए तो ज्यारे तीक्ष्ण धारवाळा साधन वडे कापवामां आवे त्यारे बे अनियमित सपाटीवाळा भागमां शुं थाय छे विभाजित थाय छे। हवे जो गलन उष्मानी जो बात करिए तो एनी गलन उष्मा लईए तो तेने निश्चित गलन उष्मा होती नहीं। ज्यारे स्फटिकमय पदार्थ में शुं हतुं निश्चित गलन उष्मा हती ज्यारे अहींया अस्फटिकमय पदार्थ ने तेने निश्चित गलन उष्मा होती नहीं। हवे जो स्फटिकमय पदार्थ केवा हता तो आपणे बात करी लास्ट टाइम तो केवा होय स्वभावे विषमदेशिक हता। जुदी जुदी दिशानी अंदर अणुओनी गोठवणी जुदी जुदी हती माटे एने आपणे विषमदेशिक कहेता हता जेना लीधे वक्रीभवनांक अने विद्युत वाहकता केवी हती बधी दिशामां सरखी हती नहीं। ज्यारे अस्फटिकमय पदार्थनी जो बात करिए तो ए केवा छे स्वभावे समदेशिक छे। तो आपणे अस्फटिकमय पदार्थनी बात करिए तो अस्फटिकमय पदार्थ स्वभावे समदेशिक होय छे। अर्थात तेमना गुणधर्मो कया गुणधर्मोनी बात करीशुं तो यांत्रिक मजबूताई त्या पछी वक्रीभवनांक अने विद्युत वाहकता। विद्युत वगैरह बधी दिशामां सरखी होय छे। बधी दिशामां सरखी होय छे। तो आटलू तमारी याद राखजो। बीजू बधी दिशामां अणुनी गोठवणी चोक्कस होती नथी तो ए पण याद राखजो। तो बधी ज दिशामां अणुओनी गोठवणी एटले के कणोनी गोठवणी चोक्कस होती नथी। परिणामे बधी दिशामां कोईपण भौतिक गुणधर्मनुं मूल्य सरखुं होतुं नथी। चोक्कस गोठवणी ना होय तो भौतिक गुणधर्मो पण सरखा होता नथी। तो बधी दिशामां भौतिक गुणधर्मोनुं मूल्य एक सरखुं होतुं नथी। आ खास याद राखवानुं। एक सरखुं होतुं नथी। आवा पदार्थों आपणे जो गुण आवा पदार्थों केवा पदार्थों केवा पेलामां वास्तविक पदार्थो हता। स्फटिकमय पदार्थने आपणे वास्तविक कहीए छीए तो आपणे आभासी पदार्थो कही शकीए। तो आवा पदार्थोने आभासी घन पदार्थ कहेवाय। अथवा अति ठंडा पाड़ेला प्रवाही पदार्थ एटले अतिशीत प्रवाही पदार्थो कहेवाय। तो आ खास याद राखवानुं। ऑब्जेक्टिव में पूछाय एवो प्रश्न छे।
अस्फटिकमय पदार्थों शू कहवाय आभासी घन पदार्थों कहवाय अथवा तो अतिशीत प्रवाही पदार्थ कहवाय केवा कहवाय अतिशीत खूब ठंडा पाड़ेला प्रवाही पदार्थ। तो रबर ने एकदम ठंडू पाड़ेल रबर ए शू कहवाय अतिशीत प्रवाही पदार्थ कहवाय। ए रीते प्लास्टिक ने पण आपणे शू कहीशुं अतिशीत प्रवाही पदार्थ कहीशुं। तो आ बधा केवा पदार्थों छे आभासी घन पदार्थों छे जेने आपणे अस्फटिकमय पदार्थ कहीशुं। हवे आपणे वात करीए तो जी नीट माटे खास याद राखो मोस्ट आईएमपी नोट जे तमारा नोटबुक में उतारी देवानी जे जी नीट माटे मोस्ट आईएमपी है। तो स्फटिकमय ने अस्फटिकमय बात करिए पण अमुक एवा पदार्थों पण छे जे तमे देखीती रीते जुओ तो केवा देखाय अस्फटिकमय देखाय पण सूक्ष्म स्वरूपे अति सूक्ष्म स्वरूपे जो जोवामां आवे तो केवा होय स्फटिकमय पदार्थ होय। तो तेना आपणे शुं कहीशुं बहुस्फटिकमय पदार्थ कहीशुं। तो धातुओ जे छे मोटा भागनी धातुओ केवी छे तो बहुस्फटिकमय पदार्थ छे। तो तमे जो बहारथी जोवो तो केवा देखाय अस्फटिकमय देखाय। आम अंदर अति सूक्ष्म रीते जोवामां आवे तो तमने केवुं देखाय तो स्फटिकमय देखाय। तो पछी तेना आपणे शुं कहीशुं बहुस्फटिकमय पदार्थ कहीशुं। तो आटલું याद राखो बहुस्फटिकमय पदार्थ। तो देखीती रीते आने आपणे आ रीते लखी सकीए देखीती रीते अस्फटिकमय होय परंतु अति सूक्ष्म स्वरूपे जोता अति सूक्ष्म स्वरूपे स्फटिकमय रचना धरावता होय स्फटिकमय रचना धरावता होय। तो तेवा पदार्थों ने बहुस्फटिकमय पदार्थ कहे छे। दाखला तरीके धातु तो आपणे कही सकीए कि धातु केवी देखाती होय तो कि धातुओ विषमदेशिक होवा छतां केवी देखाय छे समदेशिक देखावा लागे छे। तो आ पण ऑब्जेक्टिव पूछायुं छे धातु देखाय केवी विषमदेशिक छे केवी तो विषमदेशिक लागे छे केवी समदेशिक। आ खास याद राखजो। बीजું याद राखवानुं तो अस्फटिकमय पदार्थनी अंदर आपणे सिलिकॉननी वात करीए तो सिलिकॉन माटे आटલું याद राखवानुं। तो सिलिकॉन ए फोटोवोल्टेइक अस्फटिकमय पदार्थ है। तो सिलिकॉन केवो है तो फोटोवोल्टेइक अस्फटिकमय पदार्थ है। फोटोवोल्टेइक से मतलब ये तो कि जे सूर्य ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करे फोटोसेल तरीके काम करे। जे सिलिकॉन उपयोग शो थाय छे तो जे फोटोसेल जे होय ने फोटोसेल अंदर आ सिलिकॉन उपयोग थतो होय छे। तो अहींया सिलिकॉन उपयोग शो थाय तो सूर्य ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करे छे। तो सूर्य ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करे छे। तो आने आपणे कहीशुं अस्फटिकमय पदार्थ जोड़े जोड़े आ जी नीट माटे मोस्ट आईएमपी टॉपिकनी पण चर्चा करी लीधी। हवे आ तो आम तमने एक होमवर्क में काम आपी दઉં છું। तो होमवर्क याद राखो SW तफावत आपो स्फटिकमय पदार्थ अने अस्फटिकमय पदार्थ। तो आ तफावत तमारे रजू करवानो छे। तो आटલું કામ તમારે જાતે કરવાનું છે।